everyone, and welcome to another episode of We Roar Together, a show where fans from Delhi Capitals and away teams get together to have a discussion on cricket. So, what's there on our show today? Number one, it's Guru versus Shishya for the third time in this season. Let's see whether the Shishya would be able to do a hat trick over Guru in this season. Number two, we'll be talking about what should be the ideal thing to do if a captain wins the toss. Number three, Gabbar or Faf, whose experience will come good tonight for their respective team. Number four, will Imran Tahir or Amit Mishra gonna play tonight? Number five, it's gonna be a battle between Kagiso Rabada and Rick Nokia, the South African duo for Delhi Capitals, versus Shardul Thakur and Deepak Chahar, the Indian duo for Chennai Super Kings. Number six, fantasy cricket. Again, an interesting part of our show, and there's a small quiz for the fans towards the end of the show. Let's see whether they can match the We Row Together's Fantasy 11. So let's get into the action with our fans and hear what their opinions are for their respective teams for this qualifier one. Hello, everyone, and welcome to another episode of We Roar Together, a show where fans from Delhi Capitals and away teams get together to have a discussion on cricket. And it's a big day for both CSK and DC fans. And to discuss that, I have with me Rishi and Ronak from CSK and Shiv and Utkarsh from Delhi Capitals. So let's talk about this match. It's a qualifier one between Delhi Capitals and Chennai Super Kings. And once again, it's a battle between Guru and Shishya. So Rishi, starting with you, what are your thoughts on this? क्या लगता है कि इस बार भी शिष्य जीतेगा या फिर गुरु इस बार कुछ नए अपने मेथड्स लेके आएंगे उनके लिए? Yeah, Sunny, thank you so much first of all for having me on the show today. And गुरु शिष्य की जब बात होती है तो शिष्य ने 2 मैचेस तो जीते हैं इस सीजन में, but the guru is going to come hard today and we will win the match today. I have a feeling that CSK is going to bounce back. We've lost 3 games on the trot. We haven't had the kind of last leg of the IPL that's great the last few games, but I think Chennai Super King is going to roar back today. Well, you're talking about roaring. So शिव, क्या लगता है कि सीएसके के लायंस रोर करेंगे या दिल्ली के टाइगर्स रोर करेंगे? फॉर श्योर दिल्ली के टाइगर्स, उनका कॉन्फिडेंस इस टाइम नेक्स्ट लेवल पे है. जैसे हमने देखा कि लास्ट सीजन और इस सीजन के सारे लीग मैचेस दिल्ली कैपिटल्स जीती है, तो ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा हाई देन चेन्नई सुपर किंग्स. दिल्ली के प्लेयर्स थोड़े से प्रेशर रहेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच है, क्योंकि ऑब्वियसली एक फर्स्ट स्पॉट और एक सेकंड स्पॉट में कुछ फर्क होता है कि, और एक कॉन्फिडेंस आता है जब लीग से जो बंदा फर्स्ट स्पॉट से जाए प्लेऑफ्स में. तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से दिल्ली के टाइगर्स ही रोर करेंगे एंड दिल्ली कैपिटल्स विल मेक इट इनटू द फाइनल्स. वेल, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस बैटल में जो कि क्वालिफायर है, जहाँ पे गुरु को ज़्यादा एक्सपीरियंस है शिष्य से, देखते हैं क्या शिष्य जो गुरु के मेथड्स हैं उन्हें रॉन्ग प्रूव कर पाते हैं इस क्वालिफायर में. तो इसी के बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर टॉस जीता जाए कि टीम को क्या करना चाहिए. कि टॉस जीत गए हैं, उसके बाद उन्हें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए. Ronak, your thoughts on this? If you were the captain, if you were in the shoes of MSD and you won the toss, what would you have done? Those are anyways big shoes to fill. So I would not say I'm the shoes of MS Dhoni, but cricketing sense says that you should bat second, because last 7-8 matches the chasing team have won on Dubai pitch. So it says a lot about that. And to be honest, I would also do that because that makes a lot of sense. And CSK has won all the games batting second. Batting first, we have some issues. So on that logic, also we will like to chase the game. So that says it. Yeah. Well, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप लोग चेज करते हैं. देखते हैं क्या होता है. उत्कर्ष, suppose you are the captain of Delhi Capitals, you've won the toss, what you gonna do and why? I think Delhi would choose to bowl first, because in the entire second phase, the only match where Delhi had batted first and won the match was against Rajasthan. So out of the 6 matches, they had only one batting second except for one match. And Kolkata ke saath, we had batted first and we had obviously lost that match, but it was still a very close match. So Delhi has been always a supporter of chasing targets, because Delhi has those strike pace bowlers that can turn the game completely around. So I would opt, if I was in Rishabh Pant's place, although there is no comparison, but if I was in Rishabh Pant's place, I would choose for Delhi to bowl first.
वेल दोनों कैप्टन्स ये चाहते हैं कि पहले बॉलिंग मिल जाए, क्योंकि बोथ हैव बीन डूइंग वेल व्हाइल चेजिंग, बोथ हैव वन मोस्ट ऑफ द गेम्स व्हाइल चेजिंग। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि देखा जाएगा कि टॉस जीत के क्या होगा। अब अगर टॉस जीत गए हैं तो ओपनर्स का क्या इसमें रोल है? हाउ वुड द एक्सपीरियंस ऑफ शिखर धवन and Faf du Plessis come good for their respective teams? Starting with you, Rishi. Rishi, what do you think about Faf du Plessis' experience in the knockout? Especially, we've seen in the past his one game for CSK in the qualifiers. So, your thoughts on that? Sunny, I think Chennai Super Kings, recent performance has to be credited to the openers. The way Fab du Plessis and Rituraj Gaikwad have batted up the order, the kind of start they've given, they've scored over 500 runs this year in the IPL together opening. So I think the openers have to give us a solid start. Make sure they bat the first 6 overs. I don't care if we score 7 or 8 runs and over, or even 6 runs and over in the first 6 overs. The UAE pitches have actually been completely different as to what they were in the last year. So the openers have to make sure that they don't let DC take early wickets. I think the advantage Delhi Capitals को मिलता है जब वो early wickets लेते हैं, and the pressure builds up on the other team by losing wickets in the power play, and then back-to-back wickets fall. So that has to be kept in mind, and I think they're both well experienced. With the experience Faf has, it would be possible to clear out the first 6 overs easily. वेल फाफ के पास एक्सपीरियंस है, गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इससे बेटर बात तो कोई हो ही नहीं सकती कमिंग टू द क्वालिफायर्स। और एमएस धोनी का एक्सपीरियंस इज ऑलरेडी देयर, सो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। शिव, कमिंग टू यू, विल गब्बर रोर अ बिग this time against CSK, or do you think that is it going to be the youngsters Prithvi Shaw who's going to go big tonight? Absolutely, Gabbar is a big match player, as we have seen in all the ICC tournaments as well. And CSK के against गब्बर का कुछ अलग रिकॉर्ड है, अगर हमने देखा हो। पहले भी लास्ट सीजन भी 80s में कुछ मारे थे, एंड फर्स्ट फेज में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट CSK। सेकंड फेज में भी गब्बर के हाईएस्ट स्कोरर थे अभी जो मैच हुआ हमारा अगेंस्ट CSK। सो गब्बर और CSK का कुछ अलग कनेक्शन है, एंड गब्बर ऑब्वियसली क्वालिफायर 1 है, एक्सपीरियंस बंदा है, तो उनको ऑब्वियसली एक अलग सा ना वो होता है, उनके पास एक अलग सा प्रेशर रिलीज करने के लिए उनके पास कोई चीज एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो गब्बर विल रोर, एंड पृथ्वी शॉ एग्रेसिव बैट्समैन, एग्रेसिव स्टार्ट देंगे हमें। उनके जो शॉर्ट कैमियोज है वो बहुत पसंद है, तो आई होप वो शॉर्ट कैमियोज को 50-60 तक लेकर जाए। वेल दोनों टीम के फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दोनों के पास सिमिलैरिटी है ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। एक्सपीरियंस और यूथ का जो कॉम्बिनेशन है दोनों टीम्स के लिए, इट हैज वर्कड रियली वेल फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के जो ओपनर्स हैं, दे स्कोर्ड मैनेज टू स्कोर ओवर 400 प्लस रन्स इन द सीजन्स। सो बैटिंग की बात हो गई, बॉलिंग के पास भी आते हैं, स्पेशली स्पिनर्स। हमने एक्सपीरियंस की ही बात करी है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस व्हिच इमरान ताहिर एंड अमित मिश्रा हैव। So, Ronak, according to you, do you think CSK should play Imran Tahir in today's match, considering he's got a lot of experience bowling in different T20 leagues and बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज भी हो सकते हैं वो, कंसिडरिंग दुबई एक बड़ा ग्राउंड है। सो योर थॉट्स ऑन दिस? यार सनी, अगर सच बताओ तो आई फील लाइक दैट इस आईपीएल में ना इंडियन प्रीमियर लीग एक्चुअली में इंडियन प्रीमियर लीग था। यहाँ पे इंडियन यंगस्टर्स बेसिकली ऐसा परफॉर्म किया हर टीम के लिए। इवन सीएसके हैज बैक देयर यंगस्टर्स, कंसीडरिंग दैट वी वर कॉल्ड लेडीज आर्मी, एक्सपीरियंस प्रोज एंड ऑल दैट, बट वी हैव बैक्ड आवर यंगस्टर्स एंड यंगस्टर्स हैव प्रूव्ड। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस ठीक है इमरान ताहिर का, ही हैज बीन आवर लेजेंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट अगर किसी और ग्राउंड में होता, फॉर लाइक अबू धाबी में होता, द लार्जेस्ट ग्राउंड इन दुबई, सॉरी यूएई, और या फिर शारजा में होता, जो कि पता नहीं इस साल क्या कर रही है, वो कुछ अलग ही मैजिक कर रही है, उसमें क्या हो रहा है पता नहीं। तो दुबई में है तो आई डोंट सी अ स्पिनर गेटिंग अ नॉट अहेड ऑफ अ फास्ट बॉलर लाइक जॉस हेजलवुड। सो मेरे को नहीं लगता कि इमरान ताहिर जो है will get a nod ahead of any fast bowler. I would back Josh Hazelwood to fill that spot, I guess. Well, that sounds interesting because we all know कि CSK इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलता है कि वो एक कंसिस्टेंट 11 लेकर चलते हैं हर मैच में। अगर उन्हें लगता है कि ये 11 पिछले मैच में क्लिक करी थी, उससे पिछले में भी करी थी, तो दे जस्ट कीप इट वेरी सिंपल कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलो, एंड इट्स ऑल अप टू हाउ दे प्ले in the match. Utkarsh, coming to you, do you think कि Amit Mishra, who actually was very brilliant against different teams in the first phase,
do you think that his experience, his inclusion would bring a lot of positivity in the team? I feel कि Amit Mishra is such an omnipresent person that even if he is not in the playing 11, उनका experience and उनकी जो skills है, that would benefit Delhi anyway. As for the first phase, what happened was I feel कि Akshar Patel he had tested positive for coronavirus, so therefore Amit Mishra had to be played because we needed that extra spin factor, which is now filled by Akshar Patel in the second phase. So I don't think we can, free up the space in the squad for Amit Mishra. But his experience is so much that he has been already giving it to spinners such as Akshar Patel and Ashwin and even Lalit Yadav. So I feel that we will have that X factor tonight, even without Amit Mishra playing. Well, that sounds pretty interesting. Both the team, would be looking to play the same 11 if possible. एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि दोनों टीम के फैंस ने भी यही चूज़ करा है कि जो प्लेइंग 11 चल रही है उसे ही कंटिन्यू रखते हैं. वाई मेक एनी चेंजेस टू दैट? Now coming to the battle between the pace battery from both the teams, Rapada and Nokia, the South African duo of Delhi Capitals versus Chahar and Thakur, the Indian duo of Chennai Super Kings. So Rishi, how are you looking forward to this battle? साउथ अफ्रीका का पेस अटैक है दिल्ली के पास और इंडिया का पेस अटैक है चेन्नई के पास. क्या होने वाला है? कौन ज्यादा विकेट्स लेने वाला है इस मैच में? Well, Sunny, I'll be very honest. I think the Delhi pace attack has a slight advantage with the performance that they had. Deepak Chahar, if you see, he hasn't been in the best of form. He hasn't picked up wickets. He's been very expensive, top of the overs for Chennai Super Kings. Shardul Thakur, on the other hand, has been amazing. It's like he's been carrying that form from Australia ever since then. He's packed it in a gin bottle like a genie kind of a thing, and he's actually carrying it to every match with him. So, like I said, the South African pace attack looks really lethal. The pace and the bounce that they get and the experience that they have. But, at any given day, things can turn upside down. And I would hope, the Indian pacers outperform the South African pacers this time for us. Shiv, what's your take on this? Obviously, like Rishi told कि हमारा जो साउथ अफ्रीकन पेस बैटरी है तो ऑब्वियसली वो हमेशा सबसे 8 टीम्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी जो पेस बैटरी है. एंड नॉर्किया एंड रबाडा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और साउथ अफ्रीका के T20 के फर्स्ट 2 बॉलर्स हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी. सो साउथ अफ्रीका की जो हमारी पेस बैटरी है इट्स द बेस्ट पेस अटैक इन द एंटायर IPL एंड हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा. बस एक दीपक चहर और पृथ्वी शॉ का जो आपने देखा है कि पृथ्वी शॉ की विकेट दीपक चहर हर मैच में ले जाते हैं, उससे थोड़ा हमें बच के रहना पड़ेगा क्योंकि पृथ्वी शॉ की हमें वो स्टार्ट चाहिए. सो बस दीपक चहर से थोड़ा संभल के रहना. शार्दुल ठाकुर एंड के ओवर्स में लेकर जाते हो क्योंकि डेथ ओवर्स में हिटिंग के लिए जाती है टीम एंड विकेट्स मिलती है. तो नो वरीज, बस दीपक चहर से थोड़ा बच के रहना चाहिए. बाकी हम सब संभाल लेंगे. बाकी हमारी पेस अटैक तो सबको पता ही है. आई थिंक जैसा यहाँ पे शिव ने बोला है, अगर पृथ्वी शॉ हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं तो जैसा शिव बोल रहे हैं थोड़ा उस चीज पे फोकस करिए और ट्राई करिए क्विक 30-40 रन की स्टार्ट दे दीजिए. दीपक चहर को अपना विकेट मत दीजिए सो दैट दिल्ली गोज ऑन टू विन दिस मैच. बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे शो का, दैट इज फैंटेसी क्रिकेट. उसके बारे में बात कर लेते हैं. एक छोटा सा ट्विस्ट है. देयर इज अ क्विज फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट यू हैव टू डू इज, there are 4 spots which are left. You have to fill all those 4 spots and pick your captain and vice captain for the fantasy team. And let's see whether you can match the We Row Together Fantasy 11. So here it is. So as you can see, there are 4 options left: 1 batsman, 1 all-rounder, 2 bowlers, and obviously captain and vice captain. So who is going first? Just raise your hand. Okay, Shiv and Ronak. Okay, Ronak, we'll start with you. Yeah, so the batsman which is left, I would like to fill the void with Ambati Rayudu से मैं वहाँ पे करना चाहूँगा because I would not like as a CSK fan to take DC to take wickets, but it is going to happen that I'm expecting from DC उनके pace battery से कि कुछ wickets जाएंगे. And Ambati Rayudu has been the most underrated player जिन्होंने हमें हर बार bail out किया है. तो आई एम होपिंग द सेम फ्रॉम हिम. अंबती रायडू द बैटर, और वहाँ पे एक ऑलराउंडर्स की स्लॉट खाली थी, दैट इज फॉर आई गेस विद मोइन अली, just because 2 options. One is he's a
he will come on number 3 or 4. And the second option, because he's a off spinner, and you have got 4, 5, 100 left-handers in your squad. So MS Dhoni will use that. And bowlers may like to go with Anrik Nokia from Delhi Capitals. He's been in top form. I would say I rate him above Rabada for this season. And from our side, it will be Josh Hazelwood. And your captain and vice captain? Captain would be Moeen Ali again, and vice captain Shikhar Dhawan. Well, that's interesting. Let's see whether you can match that Vero Together's Fantasy 11 or not. You've got your picks really, they excite me a lot because you've got some interesting picks. You actually filled those spots which are left with some interesting players. Shiv, you wanted to go next? Go ahead. Yeah. So for the batsman spot, I'll go for Delhi Capitals Shreyas Iyer. Because we have seen he's a big match player. And in the wicket keeper, we have already Rishabh Pant. All rounder, I hope Marcus Stoinis is fit to play and Marcus Stoinis is back. क्योंकि ऐसा ऑलराउंडर आई डोंट थिंक सो किसी आईपीएल टीम में होगा जो हमें क्विक स्टार्ट भी दे सकता है अपनी बैटिंग में, एंड के वो नॉक्स भी खेल सकते हैं, फिनिशिंग नॉक्स. एंड फॉर बॉलिंग ऑप्शन, पेस बैटरी, साउथ अफ्रीकन पेस अटैक, एंड्रिक नॉकिया एंड कगिसो रबाडा. आई डोंट थिंक सो इनसे बढ़िया कोई अटैक है पूरे आईपीएल में. तो माय 11 इज दिस. And captain, vice captain? कैप्टन आई विल गो फॉर शिखर धवन, क्योंकि मैंने पहले बोला था चेन्नई और शिखर धवन का कुछ अलग बॉन्ड है. एंड फॉर वाइस कैप्टन आई विल गो फॉर अक्षर पटेल. Well, again, interesting picks by Shiv. Rishi, Utkarsh, who wants to go next? I'll go next. Okay, Rishi, you go ahead. Okay, so I would actually, kind of agree with Ronak Ambati Raidu as the batsman because, time and again he's performed well for Chennai Super Kings. If we go back slightly, the match against Mumbai Indians in the India leg, a lot of people talk about Pollard's innings that won Mumbai Indians that game, but it was actually Ambati Raidu who had a better strike rate, better hitting than Pollard, and he's time and again performed for Chennai Super Kings. So Ambati Raidu, my all-rounder would be Moeen Ali because again, Delhi Capitals have a lot of left-handers and Moeen Ali is actually due a big innings in the second leg of the IPL. He's due big shots. Then bowling, I would have the South African pace attack. I'll take one, Notia, and then the other. I'm not really sure if I can pick Bravo in this. If Bravo is eligible for the bowling department, I would have him as well because he can score runs. And Dubai big ground, so with his slower ones, if he gets it right in the spot, a lot of wickets would be coming. Well, again, interesting picks by Rishi. Really, really spot on with why he's picking all those players. Rishi, your captain, And vice captain? captain would be, I have a feeling Rituraj Gaikwad is going to perform in this match. He is going to do well. And my vice captain would be Ravindra Jadeja today. Well, interesting. Utkarsh, go ahead. Yeah, so for the batsman, I would like to pick Shreyas Iyer. I was thinking of going for Prithvi Shaw because in the first match that Delhi played this season, Prithvi Shaw was excellent against Chennai Super Kings, but his form is a little inconsistent right now. And obviously, Deepak Chahar is going to bowl tonight, so I don't want to pick Prithvi Shaw for sure. And in terms of bowling, I would go for the South African pace duo, Kagiso Rabada and Andrik Nokia, who both are brilliant this season. And for the all-rounder spot, I would want to give it to Marcus Stoinis. But seeing that his injury is still not updated yet and it's not been for sure that he's recovered or not, I would go with Moeen Ali instead of him. And for my captain, I would go with Shikhar Dhawan because he's always performed good against CSK. And for my vice captain, I would go with Andrik Nokia because I feel like he is a bowler who can not just take wickets, but take wickets at a very good economy, which is not the case with Rabada. So I feel like he would get a lot of points. And since it's the Vero Together team, I feel कि captain तो दिल्ली वाला ही होना चाहिए, तो इसलिए शिखर धवन. वेल इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपने अपने पिक्स बताए. लेट्स सी वेदर you have got it right for the We Row Together Fantasy 11. So here it is. As you can see in batting, we've got Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Rutraj Gaikwad. Shikhar Dhawan is the captain. Wicketkeeper Rishabh Pant, all-rounder Akshar Patel, Ravindra Jadeja and Moeen Ali. Jadeja is the vice captain.
And in bowling, we've got Kagiso Rabada, Imran Tahir, Ravichandran Ashwin, and Shardul Thakur. So, any final thoughts before we wrap up the show? It will be, yeah, I'll go first. Yeah, so obviously it's a big match between Chennai Super Kings and Delhi Capitals, a qualifier one, जो भी जीती finals में. Both the teams will come with their 100% effort. So हमारी तरफ से तो wishes ये है, all the very best Delhi Capitals, give your best, give your 1000%, and एक दो मैच दूर है ट्रॉफी से, just go for it. Yeah. Who wants to go next? I'd Yeah, go. I'll go. हिंदी Yeah, में एक sure. कहावत Yeah, Ronald. या Yeah, Ronald. Go ahead. हिंदी में एक कहावत है सनी, गुरु गुर रह गया और चेला शक्कर बन गया. आई एग्री दैट दिल्ली हैज बीन द बेस्ट दिस सीजन, बट गुरु हमेशा अपने हाथ में एक ट्रिक रखता है जो वो लास्ट में प्ले करता है. इक्का हमारे पास बाकी है, दैट विल प्ले ऑन द फाइनल्स एंड अगर आपको वी आर याद गोइंग होगी टू द लास्ट फाइनल्स फॉर मैच श्योर. में ऋषभ पंत वॉच ले रहा था, वो हाथ से उन्होंने वो ट्रिक भी ले लिया शायद से, तो थोड़ा सा देखिए. वो वॉच यहाँ पे नहीं रह पहनते MS धोनी. कोई नहीं. Rishi, Utkarsh, any final thoughts? Yeah, I would like to say something. I feel कि Chennai, since they have lost some of their last matches and Delhi has only lost their last current match against Bangalore, तो जो मोमेंटम है वो अभी दिल्ली के पास ही है, बिकॉज दिल्ली ने जो क्वालिफाइंग वाली टीम्स है उनमें से 2 टीमों को हरा दिया और एक टीम के साथ अभी रिसेंटली हारी है. एंड चेन्नई के पास अभी वो मोमेंटम नहीं है. ऑल्दो चेन्नई के प्लेयर्स आर वेरी गुड एंड दे हैव वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटायर क्रिकेट, but I feel like momentum does play a big role. So I would feel कि considering कि past matches में भी Delhi has won and कि चेन्नई के पास momentum नहीं है, that Delhi will have the edge over Chennai. Well, Rishi, you want to say anything? I think, Sunny, I'll let it be. I'll just let the players do the talk, walk the talk rather. And बहुत बातें होती हैं कि दिल्ली 4 मैचेस जीती on the trot against CSK. I think tables have to turn somewhere. You better hope that the tables turn today rather than in the finals. So I'm just keeping my fingers crossed. I'm going to enjoy the game today and hope that we do well today. And I think everyone would be expecting the same. Let the players do the talking on the field rather than off the field. So before we end the show, DC Toli, what's up? रोर मचा. Roar macha! Well, thank you everyone for being here on the show, for being part of We Rode Together's episode for the qualifier one. Till then, take care, bye bye, and have a great day. We are hoping to see a cracker jacker of a match. Thank you everyone. Bye bye. Thank you, all Thank the you. best.